गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वस्वदिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। श्री गुरु महाराज जी दया करुणा कृपा ही केवलम। 27th February 2026 Friday, an excellent evening. Gautam Komal Gandhar is present through Meta Facebook Live to share tabla riyaz as usual, like every day. I firstly dedicate my tabla riyaz to the lotus feet of my spiritual Gurudev and other Indian classical musicians, legend, vocalists, instrumentalists, all the tabla maestros. In memory of legend tabla wizards maestros such as Pandit Kanthe Maharaj of Banaras Gharana, Pandit Kishan Maharaj Ji, Pandit Gudai Maharaj, alias Pandit Shanta Prasad, Pandit Bhola Prasad of Bishnupur Gharana Pakhavaj, Mridangam, stalwarts Vijard and tabla maestro too. Pandit Kapil Dev Singh of Bihar, tabla maestro, disciple of Pandit Kanthe Maharaj and Kishan Maharaj. Pandit Gyan Prakash Ghosh, Pandit Shankar Ghosh, Pandit Kanai Datta, Pandit Shamul Bose, Ustad Allah Rakha Khan, his most genius maestro Vijay tabla player who is not amongst us. Last year we lost him, Ustad, one and only Ustad Zakir Hussain. So I dedicate my tabla riyaz. I did not learn anything, but I followed them and I traveled with many musicians throughout the country. So in my memory, I recall all Indian classical music concerts which I attended and I organized during my stay at Patna. So dear friends, in this way I always
try to keep engaged, busy myself in the leisure time. So I dedicate and I just start my tabla riyaj, be connected. So, dear friends, who those are now witnessing, who those are watching my live Meta Facebook, thanks a ton. Be happy, be healthy, be musically tuned, and be spiritually blessed. ये तबले में शुरुआत इसे कहते हैं, सलामी कहते हैं,
और बनारस की भाषा में इसे उठान कहा जाता है। जिस तरह से शास्त्रीय गायन गाया जाता है, पहले राग में वो आलाप दर्शाते हैं, आलाप के बाद फिर अपना बंदिश में ताने सरगमे जितने भी हैं चीजें को दिखाते हैं बंदिश को। तो उसी तरह से गाने में जिस तरह से आलाप होती है, उसी तरह से स्वतंत्र तबला वादन में भी ये पेशकार कहा जाता है, सलामी कहा जाता है, शुरुआत कहा जाता है, उठान कहा जाता है। बहुत सुंदर ये रेला को फ्लॉलेसली बजाया करते थे पंडित शंकर घोष जी। उन्हीं का ये उपज था। ही क्रिएटेड दिस रेला। बहुत सुंदर
पंडित शंकर घोष जी के हाथों से ये निकलता था, मानो गुलाब का फूल खिल उठता था। पंडित शंकर घोष, he was most talented tabla player of the world. Mathematically, he was so strong. And similarly, nowadays, one and only Pandit Sapan Chaudhary. Yes, I heard his tabla at the age of more than 80 years, 81 years he is now running. I heard right from December to this February. He left Calcutta on 21st February. Last week, yes, last week I attended his program at ICCR Hall, Indian Council of Cultural Relations, organized by that Ashish Khan World Music, Siraj and his associates. They organized wonderful performance. Pandit Sapan Chaudhary ji's. Pandit Sapan Chaudhary is a genius tabla player. Very methodically, very systematically, he plays tabla during his solo tabla performance. So I recall all the legend tabla players. Pandit Shamta Prasad, I saw him right from very childhood. Pandit Shamta Prasad, Pandit Kishan Maharaj, Pandit Anokhe Lal Mishra, his son Pandit Ramji Mishra, Pandit Lachu Maharaj, of all from Banaras Gharana. Pandit Mahadev Mishra, he was classical singer, as well as he was a great tabla player. I saw Ustad Allah Rakha Khan of Punjab Gharana. He is most genius. Ustad Zakir Hussain, he popularized tabla throughout the world. Similarly, I saw Ustad Afaq Hussain Khan, Ustad Mehdi Hasan Khan, Ustad Latif Ahmed Khan, Ustad Hasmat Khan, Ustad Safat Ahmed Khan, Ustad Nijamuddin Khan, Ustad Munne Khan, Ustad Ballu Khan, Ustad Ajam Khan, Ustad Abid Hussain Khan, Ustad Amir Hussain Khan, Ustad Ahmed Jan Tirakwa, all legend tabla maestro in the past and in the present. Yes, undoubtedly many tabla players, but few tabla players who plays tabla systematically, mathematically, very strong and very flawlessly they are playing nowadays. Many tabla player, Pandit Sapan Chaudhary, Pandit Suresh Talwalkar of Maharashtra, many Jogesh Samsi, that Anindo Chatterjee, Sanjay Mukherjee, Pandit Kumar Bose, all these tabla players. So I must appreciate, and I also appreciate one of my very bosom friend. He is disciple of my Guru Bhai, we can say. He is Arup Chatterjee. He is a very talented and genius tabla player nowadays. His father was Pandit Pankaj Chattopadhyay and his guru undoubtedly Pandit Shankar Ghosh. The shadow of Pandit Shankar Ghosh, which I find on Arup Chatterjee when he plays tabla, solo tabla. Yes, in this way I find everybody very talented and genius tabla player. So this flawlessly Rela was playing by Pandit Shankar Ghosh ji. धाती का धेटेता धाती का धेटेता धाती गेना ताती का धेटेता धाती का धेटेता धाती गेना, कुछ इसके पेच है बड़े. There's some varieties of this Rela.
tabla is very tuned. So, dear friends, your valuable comments are solicited. If yes, I must say, if anything goes wrong in my playing tabla, the mistake is committing by me, and if anything goes very right and correct, it must be with the all maestro tabla legend, tabla mentor, guru, instructor, teacher, master, whatever we can say, we can quote. Yes, this bowl is very uh, original, traditional bowl. The bowl which belongs to Banaras Gharana, Delhi Gharana, the initial Gharana which I stated earlier, there are Gharanas in tabla, but many tabla players they played tabla, and at present all the maestro tabla players they are playing tabla, choosing all the gharanas, and they take their own style. I must say, Kolkata is must be his own gharana too, as because Pandit Gyan Prakash Ghosh, after receiving talim from Farrukhabad's Dwain Khalifa Ustad Masid Khan, he established in initially tabla and popularized tabla in Kolkata. So Pandit Gyan Prakash Ghosh, he produced that Kolkata Gharana, Kolkata's tabla player, undoubtedly very refined tabla player in the past, and at present few tabla players are playing undoubtedly praiseworthy tabla. So I must say, original tabla Baj tabla gharana is Delhi tabla gharana is original, and Punjab Gharana is also original. So there are two original Gharanas of tabla. First of all, Delhi, and second, Punjab Gharana. And from Delhi, many great tabla maestro wizards, tabla player such as Habibuddin Khan of Ajrara Gharana, Ustad Ahmad Jan Thirakwa Sahab, and all these tabla maestros in the past, Ustad Latif Ahmed Khan of Delhi Gharana. So there were many tabla players, Delhi Gharana, who just settled in Ajrara. That became Ajrara Gharana. One tabla player settled in Farrukhabad, that it became Farrukhabad Gharana. Farrukhabad Gharana's most genius Dwain tabla Khalifa Ustad Masjid Khan Sahab, but he established in Kolkata. He gave talim from Kolkata, and initially the Lucknow Gharana, it also came from Delhi, such as Ustad Afaq Hussain Khan, his father, and Mehdi Hasan Khan on tabla player. Another Mehdi Hasan Khan, he was classical singer and ghazal singer too. So in fact, in Banaras Gharana, Pandit Pratap Maharaj, Pandit Bhairav Sahai, Pandit Baldev Sahai, that Pandit Bacha Maharaj, that legend father of Pandit Shanta Prasad, all Pandit and Khalifa legend tabla players, maestro tabla players, they settled in different places, and that became that gharana. So Delhi Gharana, Punjab Gharana, Ustad Firoz Khan,
उस्ताद अल्लाह रखा, मियाँ पीर बख्श. So in Lucknow Gharana, Banaras Gharana, Ajrara Gharana, Farrukhabad Gharana, Punjab Gharana, Delhi Gharana, these are very original. So in this way, all the tabla players, they popularized the gharanas. But I can say that the great master tabla player, maestro and vijat tabla player, they originally in the different, they played tabla from all the gharanas, such as Ustad Zakir Hussain, Pandit Shankar Ghosh, Pandit Shamul Bose, Pandit Kanai Datta. In this way, I find the maestro tabla players, they took their own style. Pandit Sapan Chaudhary, he belongs to Lucknow Gharana. He is Pandit Sapan Chaudhary's guru, Pandit Santosh Krishna Vishwas, originally from Lucknow Gharana. But Pandit Sapan Chaudhary, he plays tabla with many gharana, different gharana. His own style. He plays tabla with his own style. So in this way, I dedicate, I recall, I salute them. So, dhate te dhada te dhage tunna kenna, tate te dhate te dhada te dhage dina gena. This is Banaras Bol. But Pandit Shankar Ghosh, he added few banis, tabla bol, with this qaida, and that is very melodiously he played and he created this qaida, and it is called Rela, which he produced, he created, he invented, Pandit Shankar Ghosh ji. Original bol. And this dina gena ऐसे भी लग सकता है, and this dina gena. And Pandit Shankar Ghosh, he added dhate te dhate te dhada te dhage tunna ghena na na nate te dhete dhate te dhage tunna kenna tate te dhate te dhada te dhage dina ghena na na nate te dhete dhage dina gena. Melody created. So spontaneously, that using this left hand, 3 fingers spontaneously without breaking, without break, and this bowl became so melodious.
and this reverse tete, ulta tete. Ta tete ta tete da da tete dhage tu na kena ta tete da tete dhage tu na kena ta tete da tete da da tete dhage tu na kena. So in this way, this dhatete 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 dhagete nagena na 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 tete tete dhatete dhagetu nagena tatete dhatete dhatete dhagete nagena na 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 tete tete dhatete dhagete nagena. There is Rela and Qaeda, this Qaeda in Banaras Gharana. So melodiously, Pandit Shankar Ghosji added this Gena na 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 tete tete dhatete dhagetu nagena. So dear friends, these are the original and traditional Qaidas of all the Gharanas: Banaras, Punjab Gharana, Lucknow Gharana, original Delhi Gharana. Delhi Gharana, they are very much fond of using this index finger and this middle finger.
using this index and middle finger. Dha tarikite tak tarikite, dha tarikite tak tarikite, dha tarikite tak tarikite, dhati dhage tumna ke, dha tarikite tak tarikite, dha tarikite tak tarikite, dhati dhage ina. Then dha tarikite tak tarikite, dha tarikite tak tarikite, dhi na ge na, ta tarikite tak tarikite, dha tarikite tak tarikite, dhi na ge na. And in Delhi Gharana, they are using index and middle finger. This way, this Delhi Gharana they are playing. And this same that 16 beats, 10 beats, and 7 beats. Mr. Thomas Sheld. Thank you, Mr. Thomas Sheld, is watching. All the friends who those are well connected to me during my Meta Facebook Live, Tabla Riyaz, Tabla Practice. Thanks from core of my heart to all the music lovers and my musician friends too.
ये बोल पंडित शांता प्रसाद लायस बुदई महाराज जी के हाथों से गुलाब का फूल खिल उठता था। धारे तादे देटे धारे धारे धाती नती नाड़े, तारे तादे देटे धारे धारे धाती नती नाड़। ये कहते थे देखो भाई दिल्ली का कुतुब मीनार, धारे तादे देटे धारे धारे धाती नती नाड़े, तारे तादे देटे धारे धारे धाती नती नाड़। इसी तरह उनके हाथों से जो भी बोल निकलता था वो फूल खिल उठता था। पंडित शांता प्रसाद बनारस घराने के महान तबला वादक थे। और उसी तरह पंडित किशन महाराज, ही वॉज ग्रेट लयदार तबला वादक जिन्हें विश्व में कहा जाता था। पंडित किशन महाराज जी की लयकारी बहुत सराहनीय था। उसी तरह उनके मुंह से सुनते थे पंडित नानक प्रसाद जी, जो नेपाल में बस गए, वो भी महान तबला वादक और लयदार तबला वादक माने जाते थे। इसी तरह बनारस के सभी गुणीजनों जो थे, पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी का नादिन दिन्ना और धीरे धीरे गिट तक क्या बात था। बचपन में हम लोग सुने हैं पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी का नादिन दिन्ना, पंडित शांता प्रसाद जी का नादिन दिन्ना, उदय महाराज जी का। इस तरह से बहुत सुंदर था, उनके हाथों से निकलता था। पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित किशोर महाराज जी, पंडित शंकर घोष, जो भी महान तबला वादक लोग थे, दे ऑलवेज से, लोग कहते थे, दे वर ऑलवेज सेइंग कि जो भी बजाओ भैया, ज्यादा स्पीड में बजाने की आवश्यकता नहीं है, कम लय में बजाओ, लेकिन बोल बानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये था उन लोगों का कथन। वो महान तबला वादक लोग ज्यादा स्पीड में बजाना पसंद नहीं करते थे। हाँ, बजाते थे जब इंस्ट्रूमेंट में बजता था, और अपना लहरा में जब उस तरह का वो जगह पर पहुंचने पर वो उस तरह से तैयारी अपना दिखाते थे, प्रदर्शित करते थे। लेकिन अभी जो ट्रेंड चला हुआ है, सभी बच्चे लोग इतना भाग रहे हैं स्पीड के पीछे, लेकिन वो चीज फूल खिल नहीं हो पा, उठ नहीं रहा है। ये साफ बात है भैया। जितने भी तबला वादक अभी इतने स्पीड में बजा रहे हैं, लेकिन उन लोगों का तबले के बोल बानी जो है, कभी कभी बहुत ये लगता है कि एक ही मोनोटोनस लग जाता है। इतना तिर बजाया करते हैं। जो भी बजाओ भैया, बहुत साफ सुथरा बजाओ और बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, तब तुम्हें बरकत मिलेगी। उस्ताद जाकिर हुसैन जी एक ऐसा तबला वादक थे विश्व में कि बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, म्यूजिक लवर्स हो या म्यूजिक लवर्स ना हो, वो सभी प्यार करते थे, आदर करते थे, उनके तबला के पीछे फिदा थे, पागल थे। उन्होंने सारे विश्व को, तबला को एक ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाया दिया, बिल्कुल, कि तबले को लेकर, तबले से विभिन्न तरह के आवाजों को उन्होंने बजाकर, दर्शाकर दिखाया। शंख ध्वनि कहिए, रास्ते में गाड़ी चल रही है उसको कहिए, इसी तरह ट्रेन इंजन, ये सब चीज वो उस्ताद जाकिर हुसैन ने इतना पॉपुलराइज कर दिया
जैसा वो स्वतंत्र तबला बजाया करते थे, सोलो तबला में उसी तरह पारंगत थे, इंस्ट्रूमेंट में पारंगत थे ही, डांस में भी उसी तरह पारंगत थे, और गाने में भी इतना साथ संगत करते थे, तो उनसे कुछ भी चीज छूटा नहीं। आज जो लोग कहते हैं कि फ्यूशन फ्यूशन, उन्होंने फ्यूशन बहुत पहले ही दिखा दिया। क्या बात है, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को याद करते हैं तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। उनका तबला, क्या बात है, उंगली में ऐसा, उनके उंगलियों में कष्ट था। अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने इस तरह से जाकिर हुसैन को इस धरती पर लाया, और बहुत ही 72-73 साल की उम्र में हम सबों को छोड़कर वो अलविदा हो गए। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को मैं नमन करता हूँ, याद करता हूँ। ये पंडित शंकर घोष जी बजाया करते थे। नाधी गधी नाना घेना घेना धाती धाधा तुन्ना, नाती कथी नाना केना घेना धाती धाधा दिन्ना। खुली और मुदी। खुली में नाधी गधी नाना घेना घेना धाती धाधा तुन्ना, और मुदी में नाती कथी नाना केना घेना धाती धाधा तुन्ना। ओपन फॉर्म एंड क्लोज्ड फॉर्म, खुली मुदी। और बनारस में इसे बांट कहा जाता है, और यहाँ फरुखाबाद में रेला कहते थे। तो बनारस में ये बांट था। धिक धिन्ना त्रिक धिन्ना धागी नदी किनारा, तिक तीना की नदी किनारा।
Yes. ये भी बड़ा अच्छा कायदा बनारस का। धागिना धा तिरकिट धागिना धा तिरकिट धा धा तिरकिट धागिना धा तिरकिट थुन्ना गिट तक तिरकिट तक ता तिरकिट ताकिना ता तिरकिट ताकिना ता तिरकिट धाधा तिरकिट धागिना धा तिरकिट धिन्ना गिट तक तिरकिट तक ता तिरकिट। Now I recall one very good Kaida played by Pandit Gyan Prakash Ghosh ji. धातरिकट धत्ते घेरना धाती घेरना थुन्ना केना तातरिकट धत्ते घेरना धाती घेरना धीना घेरना। I recall all the maestro Vijay tabla players, how they played. Yes, I try to follow them to play, and this is very good exercise of both the hand, both 10 fingers, exercise of 10 10 fingers. This right from index, middle, and this all the fingers. If I play this, yes.
his way. In one life, music cannot be completed. Very difficult subject. Music is great subject, and tabla is very mathematics. ये पंडित गुदई महाराज जी उर्फ पंडित शांता प्रसाद जी के हाथ से ये धागे तो ना गिना ताकि दिन ना गिना क्या निकलता था। हो लगता है कि गुलाब का फूल खिल रहा है हर बोल बानी में।
Dear friends, now it is 8 o'clock in the night. Today I started so early evening, just after 6. So I have to go, and I have got some other engagement, dear friends, with Guru Stuti and Lord Ganesh Vandana Stuti. I would like to end my Tabla Riyas today evening. Again, see you tomorrow. Pandit Kishore Maharaj's spiritual god, Lord Ganesha, whenever he used to play tabla solo, at the ending point he played Ganesh Stuti. So I am going to recite that Ganesh Stuti and then Shanti Mantra. गणानाम गणपति गणेश लंबोदर सोए हे भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दय ध्रुपद गावे अति विचित्र गणानाथ आज मृदंग बजावे धट धराध धर 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 कृधान दिन 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 नागे 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 धन धन तिन तिन ताके नाना
तद्रिगण ध्रिग ध्रिग दिनाग ता कृतक धरान तरान धा कृतक धरान तरान धा कृतक धरान तरान धा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वस्वदिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षि भूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय माँ गंगा माई की जय। जय भागवत भक्त भगवान की जय। Prayers go up, blessings come down. So dear friends, एक जाते जाते शेर भी मैं अर्ज करूंगा आप सबों के खिदमत में। उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और संगीत के बारे में एक शेर अवश्य ही अर्ज करना पसंद करूंगा आप सबों की खिदमत में। चरागों को अपने आंखों में महफूज रखना, चरागों को अपने आंखों में महफूज रखना, और संगीत को अपने दिलों में जहनों में समाये रखना।